Now here is the document, right? Software requirement specification, right? So आपका भी you will have the same title. Maybe you can put IIUI logo over here, right? And then for here you will write down your project's name, and as it is version 1, first time you are doing that, so it would be version 1, then prepared by your name and then your registration number. You will write down both things in it, right? And then your class and then your university and date created. So yeah, it will become the your title page, and then you will go for the table of content. Depending upon what you have written, you will write down everything into it. So now check from here. Introduction. In fact, it is becoming the first chapter. Check. 1. Introduction. 2. Overall description. 3. External interfaces. So now check. I will just only talk about chapter number 1. So if you have any quiz or assignment, we must not waste time. So at least you should start tomorrow with the introduction. So purpose. Identify the product whose software requirements are specified in this document. So if you are making a website, if you are making some application for mobile, so you will describe little bit about it, about that application, right? So now you will also mention that this document is the first version. You have not made any changes into it. So this will describe like this, the purpose of it. Then I told you about the document convention. If you use anywhere, any word, any abbreviation, any important thing, for example, I say that I am using abbreviation RWP. So I will say that RWP, wherever it will be used, it will be Rawalpindi. So I will make a table that convention or word or abbreviation, and in the other column I will write down its meaning. And I will also mention if something is bold in my document, then it means that it is important. So normally we have to describe if we are using any typographical mean जो हम type करते हैं, whatever we type. So we are typing IIUI, that is International Islamic University Islamabad. So I must mention over here. So whenever somebody tries to read out the document, he or she must know that this convention, this abbreviation, this standard means that thing. तो पहला दूसरा ये हो गया. Number 3, intended audience. We must tell them this document is useful for whom? My users, my marketing department, maybe the end user, maybe the developer, maybe designer. So now check, describe the different types of readers that the document is intended for, जिनके लिए बना है, such as developers, project managers, marketing staff, users. So now in this way you will write down. Then you will talk about your own product, your own project, product scope. I told you you have to describe that what you are going to develop. This product would be a mobile application that will help us for the chatting, right? So now check what I'm doing. I am just providing a short description of the software, right? So that whenever I am going to read about any SRS, I will just check what is the scope. So you are telling me that it will be a mobile app, then I would like to know what would be the scope. Will that chat application provide me the voice chat or only SMS, or it will provide me some media exchange, that is we can share images, we can share videos, we can have a video call or not. So I will describe everything into this. I will not say it in detail, but I will say that we are going to develop a software, बल्कि VR तो हम यूज़ नहीं करते, इसमें हम कहते हैं the proposed product will use or will be used for chatting, and during the chatting we can have the SMS texts and also the audio calls and video calls and sharing of data. So हम यहाँ पर in this 1.4 we will describe the brief scope of our project. Then if I am looking at other softwares for my software, for chatting software, so what will I do? I will write down the references, the other softwares that I have looked for my project. So I am going to make some chatting application, mobile application.
So maybe I would like to look at the WhatsApp, and I will look into it, and I'll find different features from that. So what will I do? I will write down the list of all the websites, all the applications, everything that I have consulted as a reference. So let me know, are you clear about it or not? Unclear. Clear है, चलो. Now, अब Yes, ये sir. now starts chapter 2, overall description. Now you will have to tell me about your product. अब यहाँ पर माइक ऑफ कीजिए बेटा. अब यहाँ पर you are going to explain your product in detail, right? Describe the context and the origin of the product being specified in this SRS. अब एक चीज़ होती है, in fact sometime I am making my product for the first time, and sometime what I'm doing, my company has already produced a software or some application, and we are releasing a new version of it. So what will we do? We will describe that in fact it is a new software, or it is a family software, or a new version of a software that is already working in the market, or that is already working in some organization. So check, for example, state whether this product is a follow-on member of a product family, कोई पहले से बनी हुई है, it is already in the market, so we are just making next version of it, or a replacement for certain existing system. I know that in a shop, in some for example, I say that there is a pharmacy, there is a medical store where they are using the manual system, they are using the receipts, they are using the registers. So I will write down, in fact we are going to replace that manual system, and we will provide them a website, maybe a desktop application, maybe a mobile application, with the help of which they can manage their products, they can manage their orders, they can manage their customers. So we have to write down the perspective here. पहले बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. Right. So right, product functions. So now you will have to provide me all the basic functionalities over here, because I will describe them in the next chapter, chapter number 3. It is 2.2, product functions. Now, so now check, summarize the summary short, the major functions the product must perform or must let the user perform. Details will be ये देखो, details will be provided in section 3. मैं चैप्टर कह रहा हूँ क्योंकि डेफिनेटली ये अलग अलग हैं, तो सेक्शन ठीक है, तो अलग अलग 3 हमें हिस्से मिलेंगे या चैप्टर्स या सेक्शंस के. So now here I will describe brief. For example, my software will have 3 modules. Number 1 is the typing module, other is the grammar and spell, and third is this. If I'm making some other, for example, online shopping mart, so what will I do? I'll say that customer management, order management, product management, and I will write few lines about them, not the complete functionality, not the complete functionality. 3 modules and their very basic functionality, 1 2 3. So it will become 2.2.1 customer management, 2.2.2 product manager, 2.2.3 maybe order management, whatever. So you can write down the product functions, but briefly. कुछ पूछ रहे हो बेटा, या माइक्स ऑफ रखना? सो अब देखो बेटा, here in this case we are not going to give the total detail, but what we will do, we will give them an abstract idea that what functions our product will perform. Now comes 2.3. If your software is going to have different classes of users, for example, students are there, teachers are there, and maybe program office is there, then we have to describe that which user will have which privilege, what he can do in the software. I told you in the class that a student can only upload the assignment, he can look at his marks. A teacher can download the assignment, he can check the assignment, he can upload the marks, he can upload the assignments. So now every user class will be defined. For example, I can say that in a shopping mart there is one class that is customer. So customer can place order, but the shipment will be done by the
admin or maybe some sales user. So there are two users, one is the staff or the sales and other is the customer. So we have to define the user classes and their features and what they can do, but in brief, because in chapter 3 we will do everything. Now again, I told you in the class operating environment, right? So we will have to describe that in which environment our software will work. For example, I can say that we need internet because we have a website or we have a mobile app, Wi-Fi. So we will have to describe that operating environment. And if it is a network software, that will be just like it will not be working on with the internet. So I will simply say that network environment is required in order to do this, and Windows this and this is required. जो चीज़ें whatever you need to run that application, you will have to write down in the operating environment. पहले बताओ यहाँ तक समझ में आता है? Yes, sir. चलो 2.5 चलो वेरी गुड शुक्र है 2.5 ऑफ कीजिए बेटा ऑफ कीजिए design and implementation constraint. I always told you that कि sometime we have some constraint, बेटा mic off कीजिए, some constraints, we have some risks, we have some issues. So in during the SRS we write down. So now if we have अगर है, if there is any issue, if there is any constraint, बेटा mics off नहीं, अपने mics check करें. So if there is any issue, if there is any problem, then what will I do? We will write down over here 2.5.1. Number 1, time constraint. Time is very short, so we will have to make in 3 weeks, in 4 weeks. Number 2, we need a particular chip or hardware, so please write down everything that can be an issue when you are going to develop. I told you our user promised us that in second week or in third week of January I will provide you this chip and then you can work. So we'll write down constraint is there that when user will provide us the chip, we will do that. So design and implementation constraint में हमें ज़रूरी होता है, we must mention that what can be the problem. And then we describe about the user documentation. It is up to you, just write down the names. For example, I want that I must write down I will provide along with the software and its documentation, I will provide the user manual. Sir, why? Because he must be able to learn how to use that software. I will provide them installation guide. Sir, why? Because I want my user to install the software by himself. So whatever documents, some help, some online help, some other document, if you are going or you are planning to make that, so write down over here so that it must be documented in SRS that you are bound to provide these documents to the users. पहले बताओ बात समझ में आई यहाँ तक या नहीं? Yes, sir. Very good. चलो now check 2.7 right 2.7 बस ठीक हो गया. ओए बंद करो, रुक जाओ बेईमानो. 2.7 assumption. अब मुझे जब पता चल गया कि तुम्हारा कोई असाइनमेंट है तो नाउ आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज कि तुम्हें थोड़ा जल्दी से फारिग किया जाए, 2 घंटे नहीं लगेंगे, अब जल्दी से बात करनी है. सुन लो इधर 2.7 assumptions and dependencies. अब एक चीज़ हमने समझनी है कि sometime we assume we for example I say that कि यार if I will make this software I assume that it will be used by the people who are not computer literate. अब बात को समझना है कि we are assuming कि maybe everybody who is going to use our software he will not be computer scientist. Sorry, अच्छा रुको दोबारा चलो मैं दोबारा अभी आ जाएगी, रुक जाओ जरा. So मैं दोबारा शुरू कर रहा हूँ. 2.7 assumptions and dependencies. So now check. In fact sometime we assume, हम अंदाज़ा लगाते हैं, हम सोच लेते हैं कि ऐसा होगा. So what is that assumption? For example I say that कि I feel my application will be used by a normal person who does not use the computer. So it is my assumption, मैं assume कर रहा हूँ.
Sir, so why to write down over here? In fact, this thing will clarify that when we will make the interface, it should be easy to use. उसको हम usability कहते हैं. So, in fact, whatever you assume, जो कुछ तुमने सोचा हुआ है, तुम्हें पता है, तुम्हें लग रहा है, you feel like that this software will be used by a kid. This software will be used by an old person. And sometime, in some cases, we assume that this software will be used by the user when he is driving. तो नॉर्मली वो assumptions यहाँ डाली जाती हैं. So when we develop, we just try to look at the assumptions that who is going to use and who maybe कोई ऐसा बंदा जो special person है. He has some issue, right? अल्लाह ताला की तरफ से वो blessed है, लेकिन उसके साथ कोई issue है ऐसा कि वो special है. तो we write down the assumption कि if he will use then how we will manage. तो हमें वहाँ पे लिखना पड़ता है. अब ज़रा आ जाएं 3 पे. This is section 3 and for me it is chapter 3, right? So now check. Number 1, user interface. You know, whenever you are going to describe how your software will look like, you will have to talk about GUI, graphical user interface. So in fact, what will you do? You will write down over here what kind of user interfaces would be, how your screens will look like. So we normally describe that there would be a home screen and there would be some error messages and there should be some dialog boxes. So हम यहाँ पे कुछ हद तक उसको लिखते हैं, but again I'm telling you not in too much detail. Maybe you will write down few screens, मतलब एक structure, and then you will provide me 2 or 3 diagrams. It can be like this. और diagrams की बहुत ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है, ये हम बाद में भी बना लेते हैं, ठीक है? So we have to write down user interfaces. यहाँ पर इसने बात की है any GUI standards or product family styles. So I will write down, I will make my software just like Word. तो इसका मतलब हुआ कि मैं बता रहा हूँ कि मेरी screens कैसी होंगी. Those screens would be like the Word. And if I am just trying to use the style of daraz.pk, then I will write down that those would be like daraz.pk. And I have already mentioned in references that daraz.pk has been seen for this document. So in this way, we can write down everything how we will how the user will interact with the system. Number 1. Number 2, the hardware interface. ये तो होते होते हो ही गया, लेकिन अच्छी बात है. अब देखो जरा. I told you normally whenever we are using any software, maybe I need some hardware, right? So for example, I told you about the point of sale system, the shopping mall system. I told you they need, for example, a hardware that is barcode reader. So my software in fact will interact with some hardware. I need that hardware, and that hardware would be maybe scanner, maybe barcode reader. So in this way we will describe those interfaces. अब मैं वही कह रहा हूँ, ये screen नहीं है interface. Remember, I told you interface means how they interact, how they connect to each other. So now I can say that we will need some barcode readers, scanners, OMRs, ठीक है, या OCRs. So अब हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ हमें चाहिए. Third is software interfaces. So my software will run on which Alhamdulillah, on which platform. So now what happens? In fact, for example, my product needs some other product. So I will write down, for example, if my product will run, it will run on Windows 7, it will run on Windows 10, or maybe it will run on, for example, Unix or Linux or Ubuntu. Or अगर mobile app है, there is a mobile app, I can write down the Android operating system is required, or I will say that कि iOS, ठीक है, iPhone वाला, that is required. So in fact what we are doing, we are describing the software that are required to interact. ये interface का मतलब वो है जो मैंने आपको I gave you the example of those wires, कि wires are connected to each other, component to component. Even यहाँ पर भी है कि other specific software component. So that means operating system, that means other
app, some tool. For example, I say that my software will not run if there is no calculator available in your computer. So that means there should be a computer, so your software will interact with that. नेक्स्ट चेक कर लीजिए आपने क्या लिखना है, कम्युनिकेशन. अब ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन इंटरफेसेस. वेन एवर यू आर नॉट मेकिंग एनी प्रोडक्ट दैट इज स्टैंड अलोन, वो अकेली चल रही है, नहीं आप नहीं बना रहे, यू आर मेकिंग अ सॉफ्टवेयर दैट विल कम्युनिकेट थ्रू इंटरनेट via Wi-Fi or something. In that case, you will have to describe how your software will communicate. Will there be some wired network? Will there be some Wi-Fi? Will there be some other source? So you will have to define communication interface, which बेटा जो बच्चा भी ट्राई कर रहा है उसको बताओ कि ना कौन है, मोहम्मद इब्रार को बोलो कि यार तुम किसी और से आ रहे हो, IIU से आओ. So now check. So what I was saying, when we talk about the communication interfaces, we will have to describe my software will work on only, for example, I say that, for example, in this there is browser. और ये कौन सा वाला ब्राउजर है? सो गए साहब. हेलो हजरात, आप जा रहे हैं अच्छा जाग रहे हैं, सॉरी ठीक हो गया. अच्छा आप सुनो, चुप हो जाओ चुप हो जाओ. मैंने कहा मैं ये परेशान हो गया था कि मैं हूं या नहीं हूं या उधर कोई है. सुनो बेटा, ये जो है ना, अब मैं कहता हूं कि बस 2 मिनट रुक जाओ, मैं शुरू कर. भाई मुझे टेंशन ये है कि सुन भी रहा है या कट गया ये. सुनो इधर. सो माई सॉफ्टवेयर विल यूज अ ब्राउजर. देखो ये ब्राउजर है, और कौन सा ब्राउजर है ये देखो. अब मैं कह रहा हूँ यार क्रोम पे चलेगा, और अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि यार मेरा सॉफ्टवेयर जो है क्रोम के अलावा कम्युनिकेट कर पाएगा, बातें कर पाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी, और मेरा जो सॉफ्टवेयर है ये मोजिला फायरफॉक्स पे भी चलेगा. बताने का मतलब क्या होता है कि we have to mention that how our software will run, and if it is communicating with others, how will it communicate. So I will talk about the web browser, I will talk about the internet type, I will talk about the environment. So we'll have to define this communication interfaces. Now 4, that is, अब यहाँ से देखना शुरू करो, system features, that is more towards us. So here we will write down following are the main requirements of our software or functionality of our software. So now check 4.1 says what? System feature 1. So I will not write down 4.1 as system feature 1. I will write down 4.1, and I will write down over here, for example, order management. A component name I will write down, and I'll say that this is my basic functionality, a component functionality, and then I will write down like this. बेटे आपका माइक चल रहा है, थोड़ी देर बाद अब्बा जान जब गाली दें तो मुझ तक ना पहुंच जाए, माइक ऑफ कर दिया करें. Everybody check your mics now. 4.1 system feature. So here you will not have to write down system feature 1. Here you will write down, for example, log in. For example, I say that placing an order. So in fact, whatever my function is, I will write down that. So like this, give it some heading and try to write down the name of that feature or that requirement, and then write down description and priority. अब क्या करना है, आपने बताना है कि this feature will do what, short description of the feature and indicate whether it is of high, medium or low priority. तो आपने बताना है कि जनाब this is login feature, this is forgot password. So in this way we are going to write down system feature 1. What are the, so stimulus or response sequence. So we will have to define how user will do that. If he has to log in, so we'll write down he will open the browser, he will give the URL, he will go to that place, then he will write down the login and the password, and then he will log in. तो हमें उसका सीक्वेंस चाहिए कि वो कैसे काम करेगा, सो दैट द डिज़ाइनर मस्ट नो दैट कि उसको क्या डिज़ाइन करना है, डेवलपर मस्ट नो दैट कि हाउ ही हैज़ टू कोड,
and tester must know that how he will test by providing the wrong password, by not providing the password or the username. So we'll have to define this response sequence and function requirements. अब देखो ये क्या हो रहा है, इसी फीचर का जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, आइटमाइज द डिटेल्ड फंक्शनल रिक्वायरमेंट. अब याद करो, तुम्हें याद आना शुरू होगा यूज केस. याद आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो अब Yes, sir. अब अब याद आ गया। अब ये देखो फंक्शनल रिक्वायरमेंट में, तो वो क्या कह रहे हैं, डिटेल्ड फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हो, और दीज आर द सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटीज, क्या वो काम कर सकता है, व्हाट इट कैन डू, दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑर्डर फॉर द यूजर to carry out the services provided. He must log in, he must be able to log out, he must be able to select a product, he must be able to remove a product, he must be able to make the payment, whatever. So I will do what? I will have to write down the use cases, and I will have to draw the use case for each functionality. कुछ समझ नहीं आया? अच्छी बात है. हाँ, आ गया सर। So here you will define the. यस सर, इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। चलो करो जी, Yes, sir. करो, अच्छी बात है. और देखो अब क्या है, इसी तरह से फिर 4.2 होगा सिस्टम फीचर. अब मैं यहाँ पे कहूँगा एडिंग अ न्यू यूजर, फिर आई विल डिस्क्राइब एवरीथिंग अबाउट इट, फिर 4.3, 4.5, एंड इन दिस वे आई विल मेक माई डॉक्यूमेंट. नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट थिंग, दैट इज अदर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. नंबर वन, याद रखना, फंक्शनल इज इन फैक्ट दैट रिक्वायरमेंट दैट प्रोवाइड अस दैट फंक्शनैलिटी that it works for us. For example, it creates a user, he allows the user to log in. But these non functional requirements are important, but in fact these are not related to the functionality. Functionality to hai hi hai, it is there, but in order to provide you a better system, we go for the non functional requirement. For example, performance. So we should define that my website will respond within 2 seconds, within 3 seconds. The order will be fulfilled within 0.5 seconds, yani it will be added within 1 second. So what we are doing, in fact we are trying to tell that how my software will work efficiently. For example, if internet is available, then it itne internet ke sath, with for example 10 GB, it will perform like this, with 4 GB it will perform like this, with 20 GB it will perform like this. So I am describing that my software should be efficient, it should perform better, but I will also define that if we want to have the सर required. आपकी आवाज कट रही है। अच्छा मैं दोबारा बोलता हूँ. परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स में वी हैव टू डिफाइन दैट, इन फैक्ट फॉर अवर, सॉरी, हाँ, बट आवाज कट रही है सर। अच्छा, आप में से कोई बच्चा अपना माइक बंद करो यार. आप में से ना 2 माइक खुले हुए हैं जो यहाँ पे नॉइज मुझे दे रहे हैं. माइक्स बंद करो, 1 मिनट. अपने माइक्स बंद करो, 1 मिनट. माइक्स ऑफ करो. चलो अब बताओ, आवाज बेहतर है? जी सर सही है। प्लीज अभी अपने माइक्स फौरन ऑफ करना है इसके बाद, ठीक है सब लोग. अच्छा अब देखो, आई अगेन रिपीट, performance requirement. So now in fact what happened, remember one thing, we have to define non-functional. Functionality is there, it is adding the it is taking the orders, it is allowing you to add the products. But the thing is, when it allow me to add the products and place an order, how good it performs, how efficient it is. So we will have to mention that this software will be efficient, it will save your time. So it is non-functional requirement. Number one, there is performance. Number two, safety. So we have to describe what safety measures we must take. For example, मैं यूँ मिसाल देता हूँ कि if we are playing a game and it has got some graphics जो कि इशू हैं, तो हम पहले ही आपको गाइड कर देंगे कि जनाब इसको ज़्यादा देर तक यूँ खेलना या नेकेड आई से खेलना जो है ये आपके लिए ख़तरनाक है, आपकी अपनी सेफ्टी के लिए, यानी जो कुछ नुकसान पहुँच सकता है ना आपको,
तो हम उसकी बात कर रहे हैं, इंसानों को, मशीन को, कोई रोबोटिक चीज़ है उसको. सो वी ऑलवेज हैव टू मेंशन दैट सेफ्टी रिक्वायरमेंट कि अगर इफ़ यू वांट टू प्ले दिस गेम प्लीज़ डू नॉट ड्राइव वाइल यू आर प्लेइंग दैट गेम. देखो कहने को बड़ी सादी सी बात सर, ये तो अंडरस्टूड है. येस इट इज़ अंडरस्टूड, बट इट इज़ माई सेफ्टी रिक्वायरमेंट कि अगर आप कॉल कर रहे हैं तो गाड़ी मत, डोंट ड्राइव व्हेन यू आर कॉलिंग, राइट, डोंट ड्राइव व्हेन यू आर चैटिंग. सो अब ये देखिए हम सेफ्टी क्या हो रही है. इनफैक्ट वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द लॉस और डैमेज और एनी हार्म. वो आपकी मोबाइल को पहुंचे, आपको पहुंचे, वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू. नेक्स्ट वन इज द सिक्योरिटी. याद रखना, इनफैक्ट वेन एवर वी मेक सॉफ्टवेयर. सर एक क्वेश्चन है. बोलो बेटा. सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट एंड सॉफ्टवेयर इंटरफेस? ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट जो है ना, उसके अंदर ये होता है कि वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चल रहा होगा, उसको क्या चाहिए होगा. और सॉफ्टवेयर इंटरफेस के ऊपर है कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरा सॉफ्टवेयर नहीं चल सकेगा अगर आपके कंप्यूटर के ऊपर फलां एप्लीकेशन नहीं पड़ी हुई, फलां सॉफ्टवेयर नहीं पड़ा हुआ. आपने कहा सर आपकी एप्लीकेशन चलेगी. मैंने कहा तभी चलेगी अगर तुम्हारे पास इधर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, कोई ऐसा टूल हो जो नोट पैड हो फॉर एग्जांपल. अगर वो होगा तो ये चल जाएगा, वरना ये जाके रुक जाएगा. तो अब याद रखना कि जो सॉफ्टवेयर इंटरफेस है दैट टॉक्स अबाउट द अदर सॉफ्टवेयर जो आपको चाहिए. और ऑपरेटिंग कंडीशन ये भी हो सकती है कि ओएस कौन सा चाहिए, मशीनें कौन सी चाहिए, यानी जिस चीज़ पे, जिसके प्लेटफॉर्म के ऊपर वो चल रहा है वो उसकी ऑपरेटिंग कंडीशंस हैं. और मैंने तुम्हें उसकी दूसरी बात भी बताई थी, याद करो अभी तुम्हें याद आ जाएगी, कि अगर इंटरनेट होगा तो वो कैसे बिहेव करेगा और अगर नहीं होगा तो वो कैसे बिहेव करेगा. याद आ रहा है कि नहीं. यस सर. और सॉफ्टवेयर इंटरफेस के अंदर ये है, सॉफ्टवेयर इंटरफेस के अंदर ये है कि तुम्हारा सॉफ्टवेयर किस किस के साथ मिलकर काम करेगा. तो लिहाजा उसको हम सॉफ्टवेयर इंटरफेसिंग कहते हैं. कैलकुलेटर होगा तो ये चलेगा, घड़ी होगी तो ये चलेगा, कोई फॉर एग्जांपल कोई डेटाबेस का सॉफ्टवेयर होगा, कोई सीक्वल सर्वर, कोई एम एस एक्सेस, या चलो मैं तुम्हारे लफ्ज़ों में बात करता हूँ पावर पॉइंट अगर होगा तो मेरा सॉफ्टवेयर फिर बड़ा अच्छा चलेगा और ये प्रेजेंटेशन दिखाया करेगा. तो अब इसका मतलब वो सॉफ्टवेयर इंटरफेसिंग है. ऑपरेटिंग कंडीशन वो थी कि जिस कंडीशन में वो चल सकता है. अभी आगे चलते हैं. अगर नहीं समझ में आया तो सवाल दोबारा कर लो, वरना फिर माइक्स ऑन नहीं करना प्लीज़. सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स, अरे चीज़ हमेशा याद रखना, ऊपर सेफ्टी थी, सेफ्टी इज़ रिलेटेड टू यू. तुम्हें नुकसान ना पहुंचे या तुम्हारा कोई कानून ना टूट जाए तुमसे, राइट, वो थी. लेकिन सिक्योरिटी क्या है, इट इज़ मोर रिलेटेड टूवर्ड्स द डेटा. If I am talking to you, it must be between me and you. If I am sending you any document, it must be between me and you. So any person who is legally not allowed to interfere, he must not be able to get while we are talking, while we are chatting, or even he must not be able to get that data from the server. तो लिहाजा याद रखिए ये भी रिक्वायरमेंट होती है कि सॉफ्टवेयर शुड बी सिक्योर, अथेंटिकेशन हो. कभी आप उससे फिंगर के प्रिंट्स लेंगे, आप फिंगरप्रिंट्स ले रहे हैं उससे, कभी आप उसको चेहरे दिखा रहे हैं और आप फेस रिकग्निशन करवा रहे हैं. तो लिहाजा यू हैव टू मेड दैट सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी दैट मस्ट बी मैंशनड ओवर हेयर. नहीं पता चला कुछ भी. चल गया सर. चल गया सर आप पूरा. देखो लास्ट वन इज सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस. तो याद रखना मैंने आपसे कहा था वी कैन हैव थ्री सिमिलर सॉफ्टवेयर दैट नॉर्मली डू द सेम थिंग. तीनों एक ही काम कर रहे हैं बट देयर क्वालिटी कैन बी डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल वन सॉफ्टवेयर क्रैश डाउन, वन सॉफ्टवेयर इज नॉट दैट मच. यार ऑफ कीजिए, अपने माइक ऑफ करें, मेरे फिर आवाज़ कटेगी आप लोगों के लिए. राइट. सो अब देखो ज़रा, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि हमें देखना पड़ता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो उसकी क्वालिटी कितनी हाई है, हाउ बेटर क्वालिटी इज़ दैट ऑफ दैट सॉफ्टवेयर. सो हम इसमें भी लिखते हैं, ठीक है, कुछ कहानियाँ डालते हैं कि अवर सॉफ्टवेयर विल बी ऑफ हाई क्वालिटी, माई वेबसाइट विल बी अवेलेबल ऑल द टाइम, इट विल नॉट गो डाउन. सो हमें ये चीज़ें उसमें बतानी होती हैं. और लास्ट वन इज़ द बिजनेस रूल. देयर इज़ इनफैक्ट मुझे बताना पड़ेगा कि जो वेन एवर आई एम मेकिंग एनी सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जाम्पल
I say that one customer cannot buy more than 2 products of this kind. तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बिजनेस रूल्स क्या हैं, ये नहीं समझना कारोबार के रूल्स हैं, ये होते हमारे ही हैं, डेटाबेस में हम इसको यूज़ करते हैं कि व्हेन वी मेक द सॉफ्टवेयर वी डू नॉट अलाउ द यूज़र टू सेलेक्ट मोर देन दिस. इफ़ आई से दैट a student can take only maximum 6 courses, तो इट इज़ नॉट द बिजनेस रूल. ये बिजनेस रूल यूनिवर्सिटी का बिजनेस रूल तो है, बट आई नीड इट फॉर माई सॉफ्टवेयर, so I will implement like that the you student cannot enter more than 6 courses in a semester. So that is related with the business rules, right? बताओ यहाँ तक कुछ समझ में आता है? यस सर. अब सुनो, वो कह रहे हैं अगर इफ ओनली इफ यू फील लाइक कि यार कोई और रिक्वायरमेंट भी है और मुझे लग रहा है कि मैं फिट नहीं हुई, देन यू कैन ऐड एनी अदर रिक्वायरमेंट दैट यू हैव नॉट रिटन. अगर है, इफ इट इज नॉट देयर इज नो नीड ऑफ इट. एंड नाउ चेक अपेंडिक्स ए ग्लॉसरी if you have used any abbreviation, anything, so you must write down everything at its place. And now here you must give me a short glossary, a short, for example, definitions and everything. So if I want to look at the project, when I look at the glossary, I can understand easily. Appendix B, analysis model. And now you know that I told you about the use cases, class diagram. So now check. Here you have class diagram. Yes or no? And यस सर. and in the document you have you right in the document you have given me use cases and use case diagrams. You can bring over here. I talked about the data flow diagram that I will teach you in the next class. So far you know about the class diagram and you know about the use cases, and only one section or two they know only about the state transition diagram. कोई एक ग्रुप रह गया था, 2 ग्रुप्स हो चुके हैं, तो लिहाजा सर हम लोग रह गए. बस इंशाल्लाह आपको मैं ट्यूसडे को बता दूंगा, ठीक है, या कोई इसके लिए मैं आपको ट्यूटोरियल भेजता हूँ. सो नाउ चेक. अपेंडिक्स क्या होता है? एडिशनल यानी वट एवर हेल्प्स माई डॉक्यूमेंट, तो हम इधर लगाते जाएंगे, ठीक है. अब ये देखो, अब ये क्या है? टू बी डिटरमिन्ड. मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि यार आई फील लाइक कि ना मैंने किस काम को कब देखना है, किस काम में कुछ रहता है, तो ये क्या है? टू बी डिटरमिन्ड का मतलब collect a numbered list of the TBD. TBD क्या है? To be determined references that remain in the SRS so they can be tracked to clear. अब मैंने कहा यार मैंने use cases, I had to make the use cases, so I will write down कि यार ये है और ये तब तक बन जाए. Then I'll say use case diagram, यार ये तब तक बन जाए. तो मैंने जो डिटरमिन करनी है चीज़ें कि कब होंगी, कैसे होंगी. क्लोयर मीन ख़त्म करना, बंद कर देना, क्लोज कर देना. तो लिहाजा हम ये भी अपेंडिक्स बनाते हैं, अगर चाहो तो बनाना, वरना ज़रूरी नहीं है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर प्रोजेक्ट SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट. आई होप कि अब तुम्हें कम से कम तकलीफ होगी, और अगर होगी भी